in wake of the controversy surrounding former Army Chief General Naravane's unpublished book 4 Stars of Destiny, the Ministry of Defence is preparing to tighten rules for serving and retired armed forces personnel. The government is now working on new guidelines that would require prior approval before publishing books related to military matters. According to Defence Ministry sources, a recent meeting was held to discuss the framework to the new rules. Viewers, a detailed presentation was made on how to draft clear guidelines governing publications by defence personnel. The proposed norms will incorporate provisions from existing service rules as well as the Official Secrets Act. Under the proposed framework, any book containing details about military operations, strategic matters or sensitive information will be submitted to the Ministry of Defence before publication. The material will be reviewed and only after clearance will permission be granted for release. At present, there is no uniform law specifically governing book writing by retired officers. Viewers, however, the Official Secrets Act remains applicable even after retirement, and disclosure of classified information is a punishable offence. The government says while freedom of expression is respected, safeguarding national security remains paramount. With defence and security matters under sharper scrutiny, the proposed guidelines aim to prevent future controversies and ensure that sensitive information remains protected. Well, viewers, it's a big decision that the Ministry of Defence is taking, and under this proposed framework, any book containing details about military operations, strategic matters or sensitive information will have to be submitted to the Ministry of Defence before publication. Now, viewers, the ministry says that they have respect for the freedom of expression, but when it comes to national security, it is of paramount, and the material will be reviewed and only after clearance will permission be granted for release. Viewers, at present there is no uniform law specifically governing books writing by retired officers. However, the Official Secrets Act remains applicable even after retirement, and disclosure of classified information is a punishable offence. The government says that while freedom of expression is respected, but safeguarding national security remains paramount for the government. With defence and security matters under sharper scrutiny, the proposed guidelines aim to prevent future controversies and ensure that sensitive information remains protected. Well, viewers, I am being joined by my colleague Anju Nirvan on the phone line. Anju Nirvan, ये बड़ा निर्णय है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि अगर सेंट्रल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर नेशन की बात करें, सिक्योरिटी बात करें, तो वो पैरामाउंट है. तो इस पे और क्या जानकारी आपके पास है इस समय? देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने अभी जिस तरीके से जनरल नरवणे की बुक को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, उनकी बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उस कंट्रोवर्सी के बाद रक्षा मंत्रालय अब एक सख्त कदम उठाने जा रहा है और रक्षा मंत्रालय ने ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि कार्यरत और सेवानिवृत्त यानी कि जो वर्किंग ऑफिशियल्स हैं और जो रिटायर ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा लिखी जाने वाली किताबों के लिए वो एक नई गाइडलाइंस लेकर आएगा. और जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज हैं, उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इसको लेकर एक मीटिंग हुई है, जिसमें नए जो रूल्स हैं उनको उसको लेकर एक पूरी नई रिटर्न में एक जो डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत किया गया है, वो दिया गया है. यानी कि एक रिटर्न बाइबल आप उसे कह लीजिए, या रिटर्न एक पूरा मसौदा जो है वो दिया जाएगा. और उसमें जो दिशा निर्देश होंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस होगी, उसमें जितने आधिकारिक गोपनीयता के नियम यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो प्रावधान होंगे वो उसमें शामिल किए जाएंगे. इससे पहले भी बुक्स जो होती थी, जो जनरल्स या फिर कोई भी ऑफिशियल लिखता था,
वो उसको पास कराने के लिए MOD में जरूर देता था, लेकिन उसके ऊपर कोई लिखित या रिटर्न में कोई उस तरीके के नियम नहीं थे। पास तब भी करवाई जाती थी, लेकिन अब एक प्रॉपर एक रिटर्न पूरा एक नियम होगा। और नई गाइडलाइन में ये साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश होने से पहले इस प्रक्रिया से गुजरना होगा, और किताब में ऑपरेशन या कोई भी जो ऑपरेशनल रणनीति है या संवेदनशील जो जानकारियां हैं उससे जुड़ी बातें होंगी, तो लेखक को उसे पहले रक्षा मंत्रालय के पास जांच के लिए, मंजूरी के लिए भेजना होगा, और जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो उसकी जांच पड़ताल करेगा, और उसके बाद ही उस किताब के पब्लिश होने की अनुमति दी जाएगी। तो ये पूरा एक तरीके से रिटर्न फॉर्मेट में अब जो सारी चीजें होंगी, और किताबों की प्रॉपर स्क्रूटनी होगी, और उसी के बाद जो बुक्स होंगी वो पब्लिश होगी। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी की क्या स्थिति है, यानी कि अभी किस तरीके से जो प्रोसेस था वो फॉलो होता था। किताबें जो थी, वो जो भी लोग रिटायर्ड होते थे, वो किताबें जो लिखते थे, उसके लिए कोई रिटर्न या एक तरीके का इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं था, लेकिन अलग अलग नियम होते थे, और अधिकारियों को और जो रिटायर्ड लोग होते थे, दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा और जो गोपनीय जानकारी है उसको वो अहम मानते थे, इसलिए जांच के लिए भेजते थे। लेकिन इस तरीके से नहीं होती थी प्रॉपर स्क्रूटनी। पर अब एक लिखित पूरा फॉर्मेट तैयार होगा, और उसको लेकर लगातार अभी मीटिंग हुई है डिफेंस मिनिस्ट्री में, और आने वाले दिनों में वो पूरी जो गाइडलाइंस है वो लागू कर दी जाएंगी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अंजू निर्वाण। Viewers, it's a big development coming in from the Ministry of Defense. Now they are going to put in stringent laws to make sure that when it comes to sensitive information, it first goes through the Ministry of Defense. Now viewers, moving on, a big breaking news coming in. Former Army Chief Naravane's book leak case. The Delhi Police Special Cell had questioned the Penguin India team in connection with the case, and the Special Cell has issued a notice seeking answers to certain questions and summoned the team for interrogation. Now, viewers, I'm being joined by the input editor of News9, Brijesh Pandey. Brijesh, it's a big development. The Delhi Police Special Cell has summoned the Penguin team. Now, yesterday they issued notice. Now, after the notice, usually they take 4 to 5 days time to give a written reply. But now they also have questioned the Penguin team in connection with this case. Absolutely, Sabya, because this case has acquired extreme high profile, and this is like at the center of confrontation between the opposition and the government. And the government would also want to know, how did Rahul Gandhi land up with a hardbound edition of this book, which has not been published? And the permission to publish this book was withdrawn by the government. So the government wants to know how exactly the book landed at Rahul Gandhi's desk, and also the fact that how was the book published when the permission to publish was withdrawn. And the cell is saying, the special cell is also hinting at an international conspiracy and saying that the book, or certain copies of the book was sent abroad, to Australia, Canada, and a couple of other international locations before the book was published. So they want to find out exactly what led to the publication. How come the leader of the opposition has a copy of a book which has not been published so far, and who is responsible behind this fiasco as far as the book getting to see the light of the day despite the permission being denied by Ministry of Defense. So in this connection, Special Cell has interrogated the Penguin India team, and they're saying that if need arises, they might be subject to questioning again. Well, Brijesh, thank you for your inputs. Now, viewers, the Penguin India has been questioned by the Delhi Police Special Cell. Viewers, they had earlier issued a notice to Penguin India. They had given them time to answer to the notice that has been given to them by the Delhi Police Special Cell. Now, the Delhi Police Special Cell have summoned and questioned the Penguin India team in connection to the unpublished book of former Army Chief Naravane.